बच्चों, so let's read this question. Why are the rights guaranteed by the Indian Constitution called fundamental rights? So जो हमारे को rights guarantee करती है Indian Constitution, उन्हें fundamental rights क्यों कहा जाता है? We have to explain this in the question. So अगर हम key concept की बात करें, so key concept of the question will be fundamental rights, or we can say democratic rights. So key concept is fundamental rights. Now, moving on to the answer of this question. So, fundamental rights in the Indian Constitution are called so because they are the most important and essential rights guaranteed to every citizens. जो भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या फिर बेसिकली जो एसेंशियल राइट्स होते हैं एक सिटीजन को प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। या फिर हम फंडामेंटल राइट्स इसलिए उन्हें कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और एसेंशियल राइट होते हैं एक सिटीजन्स के। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट and essential rights guaranteed to a citizen, या फिर कह सकते हैं to every citizen. So they are considered fundamental because वो fundamental इसलिए considered किए जाते हैं क्योंकि we'll write this in points. पहला reason ये होता है because they are enshrined in the constitution. They are enshrined in the constitution. मानी कि अब ये राइट्स जो होते हैं दे आर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें पता है, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लीगल डॉक्यूमेंट इन द कंट्री, सो दे हैव अ स्पेशल प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, और इसलिए ये फंडामेंटल है। अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, सो दे आर इनवॉयलेबल, इनको हम वॉयलेट नहीं कर सकते। दीज आर राइट्स विच आर इनवॉयलेबल। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी इजीली टेकन अवे और सस्पेंडेड, वो इजीली हमसे लिए नहीं जा सकते या फिर उनको सस्पेंड भी नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, except in specific situations like state of emergency, they are meant to be protected all times. जैसे exception तो हर जगह होती है, so हम लोग ये तभी violate हो सकते हैं in specific situations like we have state of emergency, और बाकी सारे टाइम दे आर मेंट टू बी प्रोटेक्टेड, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, सो दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज, दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज। सो इससे हमारा ये मतलब है कि these rights ensure that individuals have freedom to live their lives with dignity and without undue interference from the government. So they include rights like rights of freedom, or we can say freedom of speech, equality, and right to lives. So if we talk about the fourth point, it says they safeguard against us against the government abuse. So they safeguard against जो भी हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, if there is any possibility, फंडामेंटल राइट्स हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अब्यूज, वेदर इट बी गवर्नमेंट और इंडिविजुअली, सो गवर्नमेंट अब्यूज, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज अ चेक ऑन द गवर्नमेंट्स पावर एंड प्रोटेक्ट द सिटीजंस फ्रॉम पोटेंशियल अब्यूजेस बाय द स्टेट। हमें पता है जब भी कोई गवर्नमेंट होती है इट डज हैव सम पावर ओवर अस, सो उसी पावर को लिमिट करने के लिए या फिर उसी पावर पे चेक रखने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। सो फोर्थली दे आर इनफोर्सेबल, दे आर इनफोर्सेबल। इसका मतलब ये है कि जो सिटीजन्स कैन सीक लीगल रेमेडीज इन दी कोर्ट्स इफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर बीन वायलेटेड। अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट किसी भी तरीके से वायलेट किया जाता है तो हम लोग कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं
to get the justice. And fundamental rights and making them more than just words on paper. So basically, they are enforceable and they are not just words on paper. अगर हम sixth and last point की बात करें, so they promote social justice. So अगर हम कोई भी अपना fundamental rights, we can speak against the violation that has been done to us. We obviously are we obviously are attaining justice in front of everyone. So, fundamental rights also include promotions to promote social justice, such as reservations for marginalized groups, ensuring equality and inclusivity in the society. We know that backward classes have been given certain reservations in the Indian Constitution. तो fundamental rights उन्हें भी promote करते हैं या फिर हम कह सकते हैं it promotes social justice. So this is the final answer to the question. They are called fundamental rights because these are most important and essential rights that are guaranteed to every citizens. और पहले they are enshrined in the constitution. हमें पता है constitution सबसे ऊपर का या फिर हम कह सकते हैं सबसे highest legal paper है that our Indian law has. So ये rights उसमें लिखे गए हैं. They are inviolable. They protect the individual's liberty, they safeguard against government abuse, and they are enforceable and they promote social justice. So, this is the final answer to the question. I hope you understood the question well. Best of luck.